Hello learners, welcome back to English Honors classes. I am Akriti and in this particular video, we are going to discuss about a syllabus from undergraduate course that is provided by IGNOU, and the paper code that we are going to discuss is BEGC 104, which is titled as British Drama and Poetry. So without doing further ado, I will just share my screen and will try to make things more visible and more clear to you all. So, the paper is titled as British Poetry and Drama and it is coded as BEGC 104. Exams are not so far, and I know you all must be in need. Ki, what are the things that we should read and in what way we can do it. So, for that purpose, I am here. In this video, I'm going to discuss two question papers, first in beginning and the second at the last after discussing syllabus, and one before discussing syllabus, because in that manner you will be able to see that what are the types of question they're asking, and if there is any block that you can miss, then which one is that? Okay. So without doing further ado, I will just move forward. Okay, directly jumping into the syllabus. मैं आपको just उससे पहले एक चीज बता देना चाहती हूँ that what our institution English Honors classes is providing for the students of English literature. So any one of you is, if you are preparing for the exams like UGC NET, BET, SLET, or JET, you can contact us. If you are preparing for BPSC TRE, that is TGT or PGT, or if you or anyone known of you is there who is preparing or who is in bachelor's or master's courses of English major and a student of English major, we have a proper courses available for them. We even provide classes for IGNOU, that is UG and PG of English literature. For more clarity of classes, you can visit our website that is given on the screen. You can put your query on the given number, that is 8102622251. We have our offline classes available in Patna and we also provide online classes. Okay. So just to think that literature needs clarity and not shortcuts. So before directly jumping into the syllabus, जैसा मैंने बोला था कि मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर देती हूँ. So here is the question paper. And just a second. Okay. So see, एक मैंने एक लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर लिया जो कि दिसंबर 2025 में हुआ था, एंड द पेपर ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 14th to 17th सेंचुरी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे. ओके, सो द पेपर इज ऑफ 3 सेक्शन, दैट इज ए, बी एंड सी. सेक्शन ए में हमें यहाँ पर कुछ राइट शॉर्ट नोट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, चार नंबर का 3 शॉर्ट नोट लिखना है. Okay, so the first is cultural materialism. Second is Chaucer's art and vision. उनके characteristics को लिखना है. So for answering this question, you need to read about Geoffrey Chaucer, who is also known as father of modern English poetry. Okay, तो Chaucer का background के बारे में जब आप पढ़ लोगे तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं. Then the Spenserian stanza. Edmund Spenser is very prominent figure in Elizabethan era. So you need to read about him as well. And then Renaissance जो कि 14th century से शुरू हुआ है. Renaissance means rebirth, किसी भी चीज का जब पुनर्जन्म होता है तो उसे हम लोग Renaissance कहते हैं. यहाँ पे लिटरेचर में rebirth का क्या मतलब है, जब आप यहाँ के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ोगे then you will be able to know about this thing also. Okay, so moving towards next question. Here in the next question they had asked about reference to the context. That means आपके जो works provided है syllabus में उनमें से कुछ lines उठाकर आपको दे दिए गए हैं. They are asking to break down or evaluate in detail that what these lines are telling you, or as lines are trying to tell you. You have to elaborate these lines. So this is only possible जब आप पर्टिकुलर उस पोएम को या फिर टेक्स्ट को इन डिटेल पढ़ते हो. सो जो भी छोटे छोटे पोएम्स आपको प्रोवाइडेड है आपके सिलेबस में वो आप पढ़ लीजिए. सो आई विल जस्ट मूव टू सेक्शन बी. सेक्शन बी कह रहा है कि आपको 5 सवालों के जवाब देने हैं और ईच क्वेश्चन विल होल्ड 10 मार्क्स. So the first question is write a note on the structure of the Wife of Bath's prologue. So ये specific question the Canterbury Tales of by Chaucer से आया हुआ है, जहाँ पे Wife of Bath एक बहुत ही ज़्यादा modern character हुआ करती हैं, and she is a woman written by Chaucer
in 1400, जो कि अभी के टाइम पीरियड के हिसाब से भी थोड़ी मॉडर्न ही है. So you must read this particular prologue and her tale also. Canterbury Tale is a collection of 24 stories. So this is a very interesting book or a collection of stories that you should read. Then discuss the theme of time in Sonnet 65. Sonnet 65 is written by William Shakespeare, a very prominent name in literature. No one from literature background can deny that he or she doesn't know about William Shakespeare. So his sonnet number 65 is very important, and sonnet 18 is again too much important. Sonnet 18 में आपको सीजन्स को रिप्रेजेंट किए गए हैं, और वही चीज आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि हाउ सीजन्स आर रिप्रेजेंटेड इन sonnet 18. So sonnet क्या होती है? Sonnet is a poem of 14 lines, and that is divided into 8 or 6 lines, or 4 4 4 and 2. That is 3 quatrains and 1 couplet. Okay, this is a discussion of question papers. I won't delve deep into a sonnet thing. So you just have to read the sonnets very carefully. और 14 लाइन की ही हैं, तो आप उसे बहुत easily पढ़ सकते हो और समझ भी सकते हो to have a better critical analysis. And discuss the role of chorus in the play Dr. Faustus. Dr. Faustus is a tragic play written by Christopher Marlowe, and this is again a very important play when we talk about tragic genre in literature, and Christopher Marlowe is also a prominent name in literature. So this particular play will give you many morals, and the chorus is someone who talks or who acts as a kind of narrator in the play. Okay, so you must read this play as well. Now write a note on the issue of censorship in the theatre in 16th century. This is a question based on the proper background of 16th century. तो किसी भी वर्क को, किसी भी राइटर को पढ़ने के लिए आपको उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना काफी जरूरी है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू द सेम. तो इसमें आप एजेस की बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से जानिए. Okay, write a note on the sleepwalking scene in the play Macbeth. Play Macbeth is written by William Shakespeare and considered as a very important tragedy, revenge tragedy play. If you are reading Shakespeare, you must read all his four tragedies, that is Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth. So उसमें एक एक्ट में स्लीपवॉकिंग सीन आता है, वो आपको यहाँ पर elaborate करने के लिए बोला गया है. Now explain The Sun Rising as a metaphysical poem. So metaphysical poem, The Sun Rising, again very short poem. You will read and you will get to know all the crux, and you can answer this question also. Now the section C. Answer any two of the following questions in approx 300 words each. Critically appreciate the sonnet LXVII. So this is sonnet number that is 67. It is written by Edmund Spenser in his collection of sonnet, that is Amority. Okay, so again sonnet is of 49, and you could always read poems of 14 lines. So just go through this and you will be able to answer this question. Discuss the theme of Death Be Not Proud. This particular poem is taken from John Donne, and you can discuss the theme if you once completed reading this poem. Now, the critical note on Sonnet 55 by William Shakespeare. The questions are not so tough, they are very straightforward, and once you are dealing with your syllabus in very minute manner, you will be able to answer all the questions, although you have to answer any two of these three and any five of these seven, and for the RTTC also any two of these four, and the short note you have to answer all two, I guess. Okay, any three out of four. So it is not a tough job, you could do that. So let us just discuss syllabus. Okay, so the part 1 deals with poetry. The block 1 deals with Geoffrey Chaucer and Edmund Spenser. The unit 1 for the Chaucer life and works, एक characteristic पे question आया था. Then unit 2 Wife of Bath prologue. This is very important, you should read it. Spenser
स्पेंसर लाइफ एंड वर्क, किसी भी ऑथर के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके लाइफ एंड वर्क को आप देख लीजिए अच्छे से। आफ्टर दैट उसके एमोरिटी के कुछ सोनेट्स यहाँ आपको प्रिस्क्राइब है, जिसमें से एलेक्स वी आई आई पे आपको भी क्रिटिकल अप्रिशिएशन अभी हमने देखा कि दिसंबर 2025 में पूछा गया था। सो अगेन 3 ही सोनेट है, दैट मीन्स 14 लाइन्स के 3 सॉनेट्स। यू कुड easily go through all these 3. Okay, so the block 2 deals with William Shakespeare and John Donne. William Shakespeare is a very prominent name in literature, and John Donne, when we talk about metaphysical poetry, he is again a very important writer. So शेक्सपियर के लाइफ एंड वर्क को जानना भी इम्पोर्टेंट है। शेक्सपियर के भी 3 सॉनेट दिए हुए हैं, 18, 55 एंड 65। ओके, दैट इज नॉट अ बिग डील। देन जॉन डन की लाइफ एंड वर्क्स, और जॉन डन की 2 पोम, द सन राइजिंग एंड डेथ बी नॉट प्राउड, और इन दोनों से ही हमने अभी क्वेश्चन देखे हैं। दैट मीन्स यू कैन नॉट मिस हिम, neither John Donne nor Shakespeare, and in block 1, neither Spenser nor Chaucer. Okay, so the part 2 deals with drama. Okay, so the block 3, it deals with Christopher Marlowe's Dr. Faustus, जिसमें आपके मार्लो की लाइफ एंड वर्क्स को पढ़ना है, उसकी टेक्सचुअल एनालिसिस को देखनी है, थीम्स को पढ़ लेना है। ये 3 को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। यूनिट 4 में आप क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देख लीजिए। इफ यू वांट यू कैन स्किप द रीटेलिंग्स, बट यू कैन नॉट मिस क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। ओके, सो इन ब्लॉक 4 विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ। मैकबेथ से भी हमने एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखा, मैकबेथ एन इंट्रोडक्शन, मैकबेथ पार्ट 1, मैकबेथ पार्ट 2 एंड मैकबेथ क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज। सो आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों ड्रामास के 3-3 यूनिट्स तो एकदम बाय हार्ट कर ले, एंड फॉर द यूनिट 4 ऑफ मैकबेथ आई थिंक यू कैन स्किप, बिकॉज कुछ वैसा डायरेक्ट क्वेश्चन हमने नहीं देखा। एंड अगेन यहाँ पे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आप कर लीजिए, आप रिटेलिंग छोड़ सकते हैं। So for more detailing, I have just presented some study guide for you people. If you want, you can take a screenshot or write it down on your paper if you are doing so. So this is a thing that I have just classified these things into primary genre, major themes and critical devices. So बस ये थोड़ी सी आप लोगों को हेल्प कर देगी। तो एक और PYQ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। I will just go through the PYQ of June 25 cycle. Okay, so June 25 cycle, here it is. Just a second. Okay. Again, the paper is of 3 sections, A, B, and C. So first question as it is, short note on any 2 of the following. Chaucer's humanism. So by the time the Chaucer was living, there was something called humanism. So what is humanism? जब चीजें human centered होती हैं। तो जब आप बैकग्राउंड पढ़ेंगे चौसर वाले ब्लॉक की, यू विल बी एबल टू आंसर दिस। एंड कोर्टली लव सोनेट, ये स्पेंसर की जो एमोरिटी है वहां से ये क्वेश्चन दिया गया है, कोर्टली लव सोनेट। ओके, लेडी मैकबेथ पे एक शॉर्ट नोट लिखना है, सो आप लेडी मैकबेथ पढ़ लीजिए, यू विल बी एबल टू राइट द शॉर्ट नोट। देन गुड एंजल एंड एविल एंजल इन डॉक्टर फॉस्टस, जब आप उसका क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू आंसर दिस आल्सो, डॉक्टर फॉस्टस। सॉरी। So moving to section B, you have again got RTTC. So I would suggest कि आप इसे एक बार देख लीजिए किस किस टेक्स्ट से आए हुए हैं, and after that you will be able to answer all these. I will be moving to section C. Section C में answer any 3 of the following question in about 400 words. So if they are asking 400 words, you are supposed to write it in 500, sorry, not 500, in 5 pages at least. So the first question is, critically analyze the banquet scene in play Macbeth. As I already said, आप Macbeth और इस पूरे पेपर में आप किसी ब्लॉक को प्रॉपर्ली नहीं छोड़ सकते हैं। आप तभी छोड़िएगा प्रॉपर्ली जब आपका कोई भी 3 ब्लॉक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। बट इफ ओनली 2 or 1 block is very strong, you are not supposed to leave any one block. अगर आपका कोई भी 3 ब्लॉक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, then you can leave one. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप चारों के चारों ब्लॉक्स का एक एनालिसिस कर ही लें।
So this particular question, critically analyze the banquet scene in play Macbeth, is from the play Macbeth by William Shakespeare. Then write a critical note on John Donne's poetic sensibility. तो जब आप लाइफ एंड वर्क वाले पेज को पढ़ेंगे, यूनिट को पढ़ेंगे जॉन डन में, that will be okay for you. Okay. Discuss the wife as interpreted in the Wife of Bath's prologue. Wife of Bath, you cannot miss. Wife of Bath से repeated questions हैं. Okay. Now discuss the theme in the play Dr. Faustus. So Dr. Faustus के theme पे ही एक आंसर लिखना है. That means it is very simple. Critically analyze sonnet 75 by Shakespeare. एमोडिटी के 3 सोनेट है जो कि एडमंड स्पेंसर ने लिखे हैं. विलियम शेक्सपियर के 3 सोनेट है. दैट मीन्स 6 सोनेट आप एकदम बाय हार्ट कर लीजिए. यू कैन नॉट मिस सोनेट. पता नहीं कौन सा सोनेट पूछ रहे. आफ्टर दैट वाइफ ऑफ बाथ यू कैन नॉट मिस. These two are the short topics here. Okay. So I hope the things are clear to you. And that's all for this video. I hope you were able to understand the things that I am trying to. So thank you for watching and all the best for your exam. Thank you.